refraction at a convex spherical surface, and there is only one. This is the only derivation for this. In old NCERT you will find number of derivations, but here you will deal with only one. Rest you can see that they are almost similar, just sign badal jayega, that's all. Okay, so we begin with the topic refraction at a convex surface. Okay, now let me draw the picture or diagram. Let us take A and B as this surface, and also we take a point here, let us say like this, and here is the object O, and also we take I image here. Let's take this angle as alpha, this angle as beta, this is I, and we also draw one vertical line here called M N. बहुत ही ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ऐसे बनाऊंगा एंड एक 90 डिग्री पे एक लाइन ऐसे डालूंगा. This is your 90 degree and you can call it, this will be obviously C, center of curvature. Okay, and that would be my I and this would be my R, incidence angle as well as angle of refraction. Got it? इसको हम गामा मान लेते हैं, and this would be my U. We already studied all of them, and this would be my V. Okay, and my R is this. Is the diagram clear? Now let us clearly understand. I will have this point as P, which is actually pole. Okay, and we have this somewhere. Let me just, this is my surface completely, and this is my denser medium, which is mu 2, and outer medium is rarer, which is mu 1. Clear? So my angle I, what is my angle I? I is an exterior angle alpha plus gamma. Do you see this gamma here? Exterior angle property. कौन से triangle में? Triangle NOC. In triangle NOC, I is alpha plus gamma. Similarly, in triangle NIC, NIC, clear? What do we get?
what is my NIC? Gamma will be R plus beta, yes or no? So gamma would be R plus beta. Okay. Alternately, I can write R is equal to gamma minus beta. इसको थोड़ा सा दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, सो हम R को ऐसा लिख देते हैं R, ठीक है, slightly italic. Alright. Now, if I have a condition that these rays are paraaxial, paraaxial माने समझते हो ना? माने alpha, beta, gammas are typically very small angles. Okay. So in that case, I can define alpha tends to 10 alpha, beta tends to 10 beta, and gamma becomes 10 gamma. Okay. So my alpha we can say as Nm upon Om, which is same as Nm upon Op. Can you check from the diagram? It makes sense or no? Because आप लिख सकते हो P is very close to M. P is close to M. Make sense? Okay. Similarly, 10 beta को हम लिख सकते हैं Nm upon Mi, which is again I would use approximation Nm upon Pi. Again, is the same logic. And gamma would be Nm upon Mc, which is my Nm upon Pc. Okay. Now let us apply Snell's law. What is the Snell's law? Sin I upon sin R. Sin I upon sin R is, मैं क्या लिख सकता हूँ sin I upon sin R को mu2 upon mu1. एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं नहीं. ओके. सो alternately I can write mu1 sin I equal to mu2 sin R. Okay, which means mu1, now again here sin I tends to I because small angles हैं, sin R tends to R. So I की जगह हम क्या लिख सकते हैं जो हमने सबसे ऊपर लिखा था अल्फा प्लस गामा. ओके. और यहाँ पे mu2 और R की जगह हम लिखेंगे गामा माइनस बीटा. You are with me? So let's put their values. So mu1 Nm upon Op plus Nm upon Pc. We are writing our values. Mu2 Nm upon Pc minus Nm upon Pi. Alright. So mu1, let's write down the value. Nm तो सब में से cancel कर दोगे. So 1 upon Op plus 1 upon Pc equal to mu2 और यहाँ पे लिखेंगे 1 upon Pc minus 1 upon Pi. Alternatively, I will write it as mu1 upon Op plus mu2 upon Pi equal to mu2 minus mu1 upon Pc. Are you with me? Is it clearly understood? Now let us use our sign convention. So if you use sign convention, OP will is minus U left side, PI is plus R right side. Okay. PI would be plus V. Okay. ध्यान से देखो. Right. And PC क्या होगा? PC is plus R right side again. So sign convention हमने. Let us put these sign conventions. So what shall we get? Mu1 upon minus U plus mu2 upon V is equal to mu2 minus mu1 upon R. This is what we shall get by putting the values, positive and negative values. So my final derivation is mu2 upon V minus mu1 upon U is mu2 minus mu1 upon R.
So it's a very important observation as well as your derivation. एग्जाम में कभी कभी 5 नंबर में आएगी तो 3 नंबर का एक ऐसा आएगा प्लस 2 नंबर का उसके साथ एक ये दे देंगे आपको एक एप्लीकेशन क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड बी अटेम्प्टिंग इट. ऑल्सो हम इन जनरल मान लो हम इसको फर्स्ट मीडियम को एयर कह देते हैं. इन जनरल लेट फर्स्ट मीडियम बी एयर. फर्स्ट medium be air, which means what? mu1 will be 1, absolute refractive index 1 हो जाएगा, and mu2 को एक कॉमन नाम mu दे दो, then एप्लीकेशन क्या बनेगी? therefore mu upon v minus 1 upon u है ना is equal to mu minus 1 upon r. Are you getting? So for air interface the formula will become this one. So this derivation can be well understood and can be applied to all the surfaces. All you have to take के कहाँ से कहाँ तुम्हारी रे जा रही है, whether it is going from dense to rarer or rarer to denser, whether it is convex or concave. Surface can be any type. So you have to use your science accordingly. Let me give you certain application problems. And इसमें से एप्लीकेशन प्रॉब्लम आती भी काफ़ी है एग्जाम में. Okay, let's do. A light from a point source from a point source in air falls on a convex spherical glass. ठीक है, whose mu ले लो आप 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लो 20 सेंटीमीटर. ठीक है, the distance of light source from the glass surface, distance of light source from the glass surface is 100 centimeter. At what position? At what position is the image formed? ठीक है, let us try to solve. Let us see what all we have first. Question को पढ़ के हमें क्या मिल रहा है. Did you observe your mu1 is 1 here and mu2 is 1.5 and u is negative 100 centimeter. Clearly ये डेटा तो सामने से दिख रहा है. एंड r क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पढ़ के देखो. पॉजिटिव होगी, बिल्कुल होगी, पॉजिटिव 20. ठीक है कि नहीं? तो अपन वी कैन इजीली स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा सकते हैं mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r. है कि नहीं? लेट अस पुट द वैल्यूज. सो 1.5 अपॉन v minus 1 upon 100 is 1.5 minus 1 upon 20. ठीक है कि नहीं?
कोई बात नहीं, सेंटीमीटर में ही आ जाएगा आंसर, आंसर भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, हाँ 100% कर सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर में था इसलिए हमने सोचा चलो आउटपुट भी सेंटीमीटर में निकाल देंगे, just to avoid any undue point and all decimal points, that's all, that was the only purpose. 1/40 लिख सकते हैं यहाँ पे, yes or no? 1.5 upon v is 1/100 plus 1/40, yes. तो अब ऐड और 1 अच्छा 100 माइनस लेंगे, बिल्कुल ठीक कह रही हो, थैंक यू। सो प्लस हो जाएगा ये, और प्लस हो जाएगा तो राइट साइड में जाकर नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। तो इसको नेगेटिव ले लो तो कितना होगा, 200 आ जाएगा ना नीचे, एंड ये -2 एंड ये +5, सो 3/100, 200 सॉरी, ओके। तो v की वैल्यू क्या आ गई, सो 3v is 200 multiplied by 1.5 and v will be 200 into 1.5 upon 3, getting or not? So 3 5 is 0.5, so 100 सेंटीमीटर प्लस, सो v की वैल्यू आ गई मेरी +100 सेंटीमीटर, या कन्वर्जन करोगी तो 1 मीटर में ही आएगा तुम्हारा, ओके। सो टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड द, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, स्टेप्स क्लियर हो गए, दैट्स द वे वी हैव टू really understand this whole thing, okay. Now we can take few more typical type of problems. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, a glass dumbbell, a glass dumbbell of length 30 centimeter and Ri, whenever I am writing Ri means refractive index of 1.5, has ends of 3 centimeter radius of curvature, okay. So find the position of the image, find the position of the image formed due to refraction, formed due to refraction at one end only, at one end only, when the object is situated, when the object is situated in air at a distance 12 centimeter from the end of the dumbbell along the axis. इस क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करो। सबसे पहले तो डम्बल होती क्या है, एनी आइडिया? यस, बट हियर इट इज स्लाइटली दे हैव सेड दैट ये एक सरफेस तो यहाँ पे इस टाइप से है, डम्बल में दोनों तरफ एक जैसी दिखेगी, है कि नहीं, ऐसे, and then here it would be like that, okay, and again on the other side the surface would be like that, similar, both side would be similar, okay. And now what can we say,
सेंटर से एक या हम क्या करेंगे, एक एक्सेस को बना देंगे, and then let's imagine that we have an object, let's say O, and then यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम ऐसे जाएंगे हैं, and obviously we will make an image somewhere internally like this, yes or no, tell me. So ये I रहेगा, this is O रहेगा, and this is your P pole, and somewhere you will have some maybe C, है ना. अभी भी किया है ना हमने इस तरह का सरफेस पे काम. एंड म्यू टू मेरा क्या है 1.5, ओके, एंड म्यू वन मेरा 1 है. तो सीधे सीधे हमें क्या निकालना है, v निकालना है. सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. म्यू टू अपॉन v माइनस म्यू वन अपॉन u is mu 2 minus mu 1 upon r, correct. So let's put the values. 1.5 upon v don't know, upon 1 upon u की वैल्यू कितनी है, it's given ना, will be 12, okay, and then it is equal to 1.5 minus 1 और r की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर प्लस की, which is 0.5 upon 3. Okay, so what is the value of v? So ये हो गया तुम्हारा 1/6. सो इसको ना ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्व, यहाँ पे स्टार लगा के, स्टार. सो वी आर गेटिंग हाउ मच, या यहाँ पे लगा लेते हैं इसको. So 1.5 upon v equal to 1 upon 6 minus 1 upon 12. So 12 is your this thing, 2 minus 1, so 1 upon 12, correct. So v is 12 times 1.5, so you'll get 18 centimeter. So as v is positive, so real image would be formed at 18 centimeter from the end P, yes, of the dumbbell, right. So आपका image यहाँ कहीं को बनेगा which is at 18 centimeter. So we can say this is 18 centimeter. Got it or not? So tell me, have you understood this topic? So this is, so today in this session we covered the entire derivation